हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? In this video, I have covered up the major operations that has happened in year 2025. Complete updated list, national and international major operations. Quick revision with top 15 MCQs and one-liner explanation. So let's start. India-centric operation, national and humanitarian, भारत केंद्रित अभियान राष्ट्रीय और मानवीय. Operation Sindoor, this is the list of all the operations that has happened in India. भारत के सभी operations की list है ये, updated list है ये with their launch date. Okay, so Operation Sindoor, 7th May 2025, Operation Shiva, July 3 to August 9, 2025. Operation Abhyas, 7th May 2025. Operation Sard Hawa, 22nd Jan 2025. Operation Sindhu, 27th June 2025. Operation Brahma, 28th March 2025. And Operation Hawk, 2025, 30 April 2025. This is a complete list of the operations that has happened in India in year 2025. Now we will talk about international operations. Antarashtriya Operation Hawkeye Strike, US Jordan, with launch date 19 December 2025. Operation Midnight Hammer, United States, 22nd June 2025. Operation True Promise 3, Iran, 13 June 2025. Operation Rising Lion, Israel, June 30 to 24, 2025. Operation Devil Hunt, Bangladesh, 8 Feb 2025. Operation Sagar Bandhu, India and Sri Lanka, on 28 November 2025. Let's discuss about this more in detail with one-line explanation. Operation Sindoor. India launched Operation Sindoor after the Pahalgam terror attack that killed 26 civilians. पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. The operation involved precision strikes on 9 terrorist camps. इस अभियान में 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले शामिल थे. The targets were located in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (POJK). लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (POJK) में स्थित थे. The main objective was to restore deterrence against terrorism. इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? आतंकवाद के खिलाफ प्रतिरोध को बहाल करना था. Pakistani military installations were not targeted to avoid escalation. तनाव को रोकने के लिए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था. See, this will going to help in making a short note also. Those who are preparing for mains examination. Now we will move to Operation Shiva. Operation Shiva was launched to ensure the safe and secure conduct of Sri Amarnath Yatra in Jammu and Kashmir. जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था.
Over 8,500 security personnel were deployed for comprehensive protection. व्यापक सुरक्षा के लिए 8,500 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था. Advanced measures include surveillance system, counter drone grids, medical facilities and disaster response team. उन्नत उपायों में निगरानी प्रणाली, ड्रोन रोधी ग्रिड, चिकित्सा सुविधाएं और आपदा प्रतिक्रिया दल शामिल थे. The operation highlights India's strong focus on pilgrimage security amid rising terror threats. ये अभियान बढ़ते आतंकी खतरों के बीच तीर्थ यात्रा सुरक्षा पर भारत के मजबूत फोकस को उजागर करता है. Next we have Operation Avyas. National-wide civil defense mock drill conducted by Ministry of Home Affairs (MHA). गृह मंत्रालय MHA द्वारा राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. What is their aim? Aimed at enhancing emergency preparedness and disaster response. आपातकालीन तैयारियों और आपदा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन अभ्यास को लाया गया. Conducted in multiple cities including Bangalore. बैंगलोर सहित कई शहरों में आयोजित किया गया. Focused on rescue operation, fire safety, evacuation drill and public awareness. बचाव अभियान, अग्नि सुरक्षा, निकासी अभ्यास और जन जागरूकता पर केंद्रित. Organized in the backdrop of heightened security alerts after terror incidents. आतंकी घटनाओं के बाद सुरक्षा संबंधी कड़ी चेतावनी के मद्देनजर आयोजित किया गया. ऑपरेशन सर्द हवा. It was launched by Border Security Force (BSF) ahead of Republic Day. गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा लॉन्च किया गया. What was the objective? Prevent infiltration along the India-Pakistan border in Rajasthan. राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ को रोकना. Conducted during dense winter fog which reduces visibility. यह कार्यक्रम सर्दियों के घने कोहरे के दौरान आयोजित किया गया जिससे दृश्यता कम हो जाती है. Deployed advanced surveillance system, drones and thermal sensor. So इसमें उन्नत निगरानी प्रणालियों, ड्रोन और थर्मल सेंसर को तैनात किया गया. Used camel patrols along along difficult desert terrain. कठिन रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटों की गश्त का इस्तेमाल किया जाता था. Additional manpower ensured 24/7 border vigilance. अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती से 24 घंटे सीमा पर निगरानी सुनिश्चित हुई. Operation Sindhu. Launched by the Government of India to evacuate Indian nationals from Iran amid the escalating Iran-Israel conflict. ईरान-इजरायल संघर्ष में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह अभियान. Indian embassies closely coordinated road and air evacuation route via Armenia. भारतीय दूतावासों ने आर्मेनिया के रास्ते सड़क और हवाई निकासी मार्गों का बारीकी से समन्वय किया. Ensure the safe and timely return of Indian citizens from a conflict zone. संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और समय पर वापसी सुनिश्चित की गई. Highlighted India's diplomatic agility and strong commitment to the safety for its citizens abroad. इसमें भारत की कूटनीतिक कुशलता और विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया.
Operation Brahma. Operation Brahma was launched uh, to provide humanitarian assistance to Myanmar after a devastating earthquake. भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया. Relief efforts included airlifted essential supplies, naval ships, and search and rescue teams. राहत प्रयासों में हवाई मार्ग से आवश्यक सामग्री की ढुलाई, नौसेना के जहाज और खोज एवं बचाव दल शामिल थे. A field hospital was deployed to provide immediate medical care to affected people. प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक क्षेत्रीय अस्पताल स्थापित किया गया था. The operation showcased India's commitment as a regional first responder. इस अभियान ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया. It aligned with India's neighborhood first policy and humanitarian diplomacy. यह भारत की पड़ोसी पहली नीति और मानवीय कूटनीति के अनुरूप था. Operation Hawk 2025. Operation Hawk 2025 was led by Central Bureau of Investigation (CBI). Operation Hawk 2025 का नेतृत्व केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने किया था. It targeted international cybercrime networks involved in online child sexual exploitation. इसका लक्ष्य ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क था. The operation was conducted in cooperation with the United States. ये अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से चलाया गया था. Digital abuse networks operating on platforms such as Discord were dismantled. Discord जैसे प्लेटफॉर्म पर संचालित डिजिटल दुर्व्यवहार नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया. The operation strengthened India's role in global cybercrime prevention effort. इस अभियान ने वैश्विक साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों में भारत की भूमिका को मजबूत किया. Now we will going to talk about international operation, अंतर्राष्ट्रीय operations. So first is Operation Hawkeye Strike US Jordan. A joint military operation was conducted against ISIS targets in Syria. सीरिया में ISIS के ठिकानों के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया गया. The action followed an attack that killed 2 US soldiers. The action followed an attack that killed 2 US soldiers. Repetition. यह कार्रवाई उस हमले के बाद की गई जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे. More than 70 ISIS locations were struck using precision air strikes. सटीक हवाई हमलों का उपयोग करते हुए ISIS के 70 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया. The objective was to degrade ISIS infrastructure and capabilities. इसका उद्देश्य ISIS के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को कमजोर करना था. The operation reaffirmed the US policy of deterrence through strength. इस अभियान ने ताकत के बल पर प्रतिरोध करने की अमेरिकी नीति की पुष्टि की. Second is Operation Midnight Hammer, United States. The US launched Operation Midnight Hammer targeting Iran's nuclear facilities at Fordo and Natanz and Isfahan. अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान स्थित परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया. The operation used stealth bombers and cruise missiles for precision strike. इस अभियान में सटीक हमलों के लिए स्टील्थ बम वर्षक विमानों और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया.
Its objective was to degrade Iran's nuclear capabilities. इसका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर करना था. The mission was designed to avoid immediate military escalation in the region. इस मिशन का उद्देश्य क्षेत्र में तत्काल सैन्य तनाव को रोकना था. Next, we have Operation Two Promise. 3. Iran. Iran launched a missile campaign targeting Israeli cities in retaliation for Israeli strikes on its nuclear and military facilities. ईरान ने इजरायल द्वारा अपने परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में इजरायली शहरों को निशाना बनाकर मिसाइलों का हमला शुरू किया. The operation showcased advanced warfare tactics such as decoy saturation to overwhelm air defense systems. इस अभियान में हवाई रक्षा प्रणालियों को पछाड़ देने के लिए छलावरण जैसी उन्नत युद्ध रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया. Operation Rising Lion, Israel. Israel launched Operation Rising Lion, targeting Iran's nuclear infrastructure, including the Natanz uranium enrichment facility. इजराइल ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जिसमें नतांजुन यूरेनियम संवर्धन सुविधा में शामिल है. The operation was described by Israel as essential for its national survival and security. इस अभियान को इजरायल ने अपने राष्ट्रीय अस्तित्व और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया. The strikes aimed to curb Iran's nuclear capabilities and potential weaponization. इन हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमताओं और संभावित हथियार निर्माण को रोकना था. The United States distanced itself from the operation, signaling a cautious diplomatic stance. अमेरिका ने इस अभियान से खुद को अलग कर लिया, जो एक सतर्क राजनीतिक रूप का संकेत था. The move marked a significant escalation in Middle East geopolitics. इस कदम से मध्य पूर्व की भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई. Next we have Operation Devil Hunt, Bangladesh. Launched by Bangladesh Interim Government, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा शुरू किया गया. Aimed at cracking down on loyalists of former Prime Minister Sheikh Hasina. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वफादारों पर नकेल कसने के उद्देश्य से किया गया. Initiated after violent acts on student protest. छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुए हिंसक हमलों के बाद इसकी शुरुआत की गई. What was the objective? Objective is to restore law and order and amid political unrest. इसका उद्देश्य राजनीतिक अशांति के बीच कानून और व्यवस्था बहाल करना है. Seeks to ensure democratic stability in the country. इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना है. And the last is Operation Sagar Bandhu, India, Sri Lanka. India launched a humanitarian assistance mission after Cyclone Ditwa hit Sri Lanka. श्रीलंका में चक्रवात दितवाह के आने के बाद भारत ने मानवीय सहायता अभियान शुरू किया. Indian naval ships delivered relief material, food supplies and medical aid. भारतीय नौसेना के जहाजों ने राहत सामग्री, खाद्य सामग्री और चिकित्सा सहायता पहुंचाई. The operation highlighted India's role as a first responder in the region. इस अभियान ने क्षेत्र में भारत को प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भूमिका को उजागर किया. It reaffirmed India's regional solidarity and commitment to humanitarian assistance in the Indian Ocean region. इसने हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता के प्रति भारत की क्षेत्रीय
एकजुटता और प्रतिबद्धता की पुष्टि की. So this was the detailed explanation of all the operation, the major operation that has happened in India and international both. So, and it will going to help you in preparing the short notes and it will to help you to understand it in a better way. Okay, let's revise the thing quickly with the top 15 MCQs. Okay, go ahead. So the first question is, what was the primary objective of India's Operation Sindoor? भारत की ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? So the option C is correct. That is, restore deterrence against terrorism. आतंकवाद के खिलाफ प्रतिरोध को बहाल करे. Next, why was this operation launched in Jammu and Kashmir? So, this we are talking about Operation Shiva. Operation Shiva. Why was Operation Shiva was launched in Jammu and Kashmir? So the option B is correct, to ensure the safety of Sri Amarnath Yatra. श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा को लागू किया गया. हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे ऑपरेशन अभ्यास का संबंध किससे है? Operation Abhyas seen recently in the news is related to. So the option C is correct. Civil defense and emergency. Emergency preparedness. नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी. This is related to Operation Sard Hawa. The BSF operation launched ahead of Republic Day to prevent infiltration during dense winter fog was focused on which border area? गणतंत्र दिवस से पहले घने शीतकाल के कोहरे के दौरान घुसपैठ रोकने के लिए शुरू किया गया बीएसएफ अभियान किस सीमावर्ती क्षेत्र पर केंद्रित था? So the option C is correct. India-Pakistan border in Rajasthan. Operation Sindhu was launched by India for which purpose? भारत द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? So the option C is correct. Evacuation of Indian national from Iran. ईरान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए. Operation Brahma was launched by India to provide humanitarian assistance to which country? भारत द्वारा किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था? So the option C, Myanmar. Operation Hawk 2025, led by the CBI, was primarily aimed at CBI के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन हॉक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? So the option C, online child sexual exploitation. ऑनलाइन बाल यौन शोषण. What was the primary objective of the joint military operation in Syria? सीरिया में संयुक्त सैन्य अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? So the option B is correct, to weaken ISIS infrastructure. ISIS के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने के लिए. What was the primary objective of Operation Midnight Hammer? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? To degrade Iran's nuclear capabilities. ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर करने के लिए. What was the key features of Iran missile campaign against Israeli cities? इजरायली शहरों के खिलाफ ईरान के मिसाइल अभियान की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? So the option B is correct. Decoy saturation and AI assisted missile guidance. छायावरण संतृप्ति और AI सहायता प्राप्त मिसाइल मार्गदर्शन. Operation Rising Lion was launched by Israel primarily to target which of the following? ऑपरेशन राइजिंग लायन को इजरायल द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था? So the option B is correct. Iran's nuclear infrastructure.
ईरान का परमाणु अवसंरचना. And this is the last question. Operation Devil Hunt was launched in Bangladesh too. बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? So the option C is correct. Crackdown on loyalists of former PM Sheikh Hasina after violent protests. हिंसक प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वफादारों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए. Okay, so this was all about today's video. Thank you all for watching it. I hope you liked this video. This is a detailed explanation with top 15 MCQ for the quick revision. This will going to help you in preparing a short notes for your mains examination, or it will going to help you in the objective questions. So that's all for today, everyone. I'm just requesting everyone to please subscribe my channel so that you will get the notification for my next video. Just click on the like button and share to as many friends as you can. Thank you all. Bye. See you in the next video.